శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमंडपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमत् अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य अंदरू मी गोत्राన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु.
గోవింద గోవింద. శ్రీ వెంకటాచలాదేశం శ్రీయాత్యాసిత వక్షసం ஸ்ரிதச்சேதன மந்தாரம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம் பஜே. குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தபிரான் பரன் சென்று சேர்த்தொழ நம் வினை ஓயுமே என்று அந்த திருமலையப்பனையும் செவித்துக்கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இப்பொழுது சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அதைத் தொடர்ந்து சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜனத்தை செவிக்க உள்ளோம். பகவானையும் பிராட்டிமார்களையும் பாதாதி கேசமாக செவித்துக்கொண்டு கல்யாண உற்சவத்தை செவிக்கலாம். திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். இதோ விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாச்சனம். அதாவது பெருமாளுடைய கைங்கரியங்கள் அனைத்திலும் கூட சேனா முதலி எனப்படும் விஸ்வக்சேனருக்கு முதலில் ஆராதனை செய்துவிட்டு அதன் பிறகுதான் மற்ற கைங்கரியங்கள் செய்வார்கள். ஆகவே இப்பொழுது நாம் விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜன கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து கலச ஆராதனையை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை வாசா வேங்கடவனே கோவிந்தா என்று கூறி அந்த திருமலை அப்பனையும் பிராட்டிமார்களையும் சேவித்துக்கொண்டு விஸ்வக்சேன ஆராதனையை சேவிப்போம். திருவேங்கடமுடையானுக்கு எத்தனையோ பெயர்கள். அவற்றில் அவரை எந்த பெயரிட்டு அழைத்தாலும் உடனடியாக நமக்கு அருளி புரிவார். அப்படி அந்த அர்ச்சக சுவாமி இதோ இப்பொழுது விஸ்வக்சேன ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவாஜன கைங்கரியத்தை செய்வதை செய்வித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, அந்த திருமலை அப்பனை விசேஷமாக செவிக்கும் நாள் இன்று ஆடி மாதம் வெள்ளிக்கிழமை மற்றும் கேட்டை நட்சத்திரம் द्वितीय कूडियोडन ओम धाराचतुर्श्रमाणशेषु सरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागं सुचिरागं सुधर्मा इदमापश्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः एते शतं वर्णयेत हस्तं यज्ञयापाधापितरा पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमृतस्वस्त्या अस्मिन् कुम्भे वर्णमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः इदमासनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः प्रजेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सङ्कीर्करसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्पर्थवाहनं पूर्वाचारोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्तं हितो न शम्भो वैराजन्ते धनिधत्तां प्रीष्यामधीशो विबधानामनादर्यामि सस्तान्दनिदान् दधात् विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुभाजनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामीटिकामावाहयामि सूत्रपतिटिका समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम् विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमुपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां प्रशमात्यज कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिर्नुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु
प्रजापतिः प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य इत्यस्य खा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरातनं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदास्सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदोपव्युषं यदा वै सूर्यवदेति अथ नक्षत्रं नयति यावति तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः भूर्भुवस्सुवरोमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीभूनिनाथसमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यञ्चक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्मराज पुण्याहं स्वस्ति भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम सरदस्य वीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तकर्मणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मऋध्यतां कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋध्यतां कर्मणः ऋद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मऋध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो वश्यवतमोरसस्तस्य भार्यते हनः वशतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मधा आपो जनयथा जनः ॐ पवमानस्वर्जनः पवित्रे नवजर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनमोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवदे पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा क्रतोगुं वृणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै वक्मेस्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सदमार्त्येषु वयग्स्यामवतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वातः प्राणेनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावने यज्ञे मापणीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुमिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कुशः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः सम्भृतगुं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगं सर्पिर्मधूदगं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सु नीति सहमापुरात् सोमस्वस्त्यावरुणस्वमीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः मा जातवेदा मूर्तयन्त्या पुनात् तच्छय्योरावृणीमहे गादिं यज्ञाय गादिं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजं शन्नो अस्तुद्यपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ प्रात्यान्तिषि देवार्त्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यान्तिषि गृहाः पशवो मार्जयन्तामतीत्यान्तिश्याप
ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ता मूर्ध्वाजान्ति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्मार्जयन्ता मतोधराधरीर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्य दन्तोः समकृतं पश्यति वीतशोकोधातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुचरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा यदयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वावोषधयो रसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवीक्रमेणां वृषणविप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो गृध्रा नागस्वधितिर्वना नागं सोमः पवित्रमत्येतिरेभन्ने अजामेकान् लोहितशुक्लकृष्णां पक्वीं प्रजां जनयन्तीकुं स्वरूपाम् अजोह्येको जुषमानो नुसेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः अगुं सत्युजिहत्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिशदतिथ्यन्तुरो नसते ऋषद्वरसद्रुतसत्योमसदब्जा गोजा अर्तजा अद्रिजा अर्तं बृहते वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः प्रपादर्घ्याचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம், அதாவது திருமுலை சாற்றுதல் என்று சொல்லுவார்கள். எம்பெருமானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனையும் புண்ணியவாசனமும் இனிதே முடிந்து அடுத்து நாம் இப்பொழுது சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷா, அதாவது அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அங்குரார்ப்பணம் என்றால் நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே சேர்த்து நீர் சேர்த்து புஷ்பங்களாலும் திருத்துழாயாலும் அர்ச்சனை செய்வதே அர்ச்சக சுவாமியினுடைய கைங்கரியம். அப்படி செய்யும் பொழுது தேவர்கள் எல்லாம் வந்து அந்த கல்யாண உற்சவத்தை நேரடியில் பார்ப்பதற்காக சேவிப்பதற்காக, பெருமாளை சேவிப்பதற்காக வருவார்கள். அவர்களை எல்லாம் வரவேற்பதற்காகவும் இந்த கைங்கரியம் நடைபெற இருக்கிறது. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனை சேவித்தால் நமக்கு எப்பொழுதும் கூட அதாவது புதிய திருப்பம் ஏற்படும் வாழ்க்கையிலே. அப்படிப்பட்ட திருப்பத்தை வேண்டிதான் பக்தர்கள் அனைவரும் கூட அந்த எம்பெருமானை சேவிப்பதற்காக வருகிறார்கள். இதோ அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே நவதானியங்களை சேர்த்து புஷ்பங்களால் அர்ச்சனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை. அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்றும், அந்த நவதானியங்களிலே நீர் சேர்த்தால் அது முளைவிட்டு வளர்வது போல் கல்யாண வாழ்க்கையும் வளரும் என்றும் ஒரு ஐதீகம். அதற்குத்தான் இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தினந்தோறும், அதாவது எந்த ஒரு பகவானுக்கு செய்யும் கைங்கரியத்திற்கு முன்பே செய்யப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவித்தோம். அடுத்ததாக நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை, ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். இந்த நேரத்திலே பெருமாளின் பெருமையை கூற விரும்புகிறேன். எம்பெருமான் திருவேங்கடவன் ஸ்ரீகிருஷ்ணனாக அவதரித்த பொழுது திருவாய்ப்பாடியில் பசுக்கூட்டம் அனைத்தையும் இளங்கன்றுகளையும் மேய்த்தவற்றிலேயே உருகி இன்று தோட்டத்தில் துள்ளி விளையாடும் கன்றினை அலிங்கனம் செய்து இது கோவிந்தனான ஸ்ரீகிருஷ்ணனால் மேய்க்கப்பட்ட கன்று என்று நினைக்கிறார் பராங்குச நாயகி. இதோ அடுத்ததாக वैवाहिक महोत्सवाक्यंतिक्रमणी प्रतिशरबन्धनदेवताराधनं करिष्ये। ओं यमर्पयन्तमनयो हविर्योजोषिडाण्डविविधा विराजन्ने तम्मयदोषायस्याननाग्निपिपणानि पतन्ते। ओं शेषमावाहयामि, सहस्रशीर्षमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि, नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतर नर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरोधराधन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा आमन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः
स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धामनूजनेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधदाज्ञादाजानता सङ्गामे महि स्वस्तियानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहत्यशो नावामिवारोहेम अम्भो मुचा माङ्गिरा सङ्गयं स्वस्त्यात्रेयं वनासा चतार्क्ष्यम् प्रियातमानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिजं बाधे स्वभायन्नो अस्तु शुभं शुभाम् கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். இந்த ரக்ஷாபந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். பகவான் அந்த திருவேங்கடமுடையான் திருவாய்ப்பாடியில் பசுக்கூட்டங்களையும் இளம் கன்றுகளையும் மேய்த்தவற்றிலே உருகி இன்று தோட்டத்திலே துள்ளி விளையாடும் கன்றினை ஆலிங்கனம் செய்து இது கோவிந்தனான ஸ்ரீகிருஷ்ணனால் மேய்க்கப்பட்ட கன்று என்கிறார் பராங்குச நாயகி. அடுத்து அதே பராங்குச நாயகி போமிளன் அகத்தின் பின் போய் என்று அவன் கிடக்கை ஈது என்கிறார். அதாவது கன்றினை ஆலிங்கனம் செய்து கோவிந்தன் மேய்த்த கன்று என்றவர் ஒரு நாகத்தின் பின்னே சென்று இந்த நாகம் எம்பெருமான் சயனிக்கும் அவனது கிடக்கை அதாவது படுக்கை என்கிறார். கன்றினை ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டது போல் அந்த நாகத்தினையும் அல்லவா ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு இது எம்பெருமானின் படுக்கை என்று சொல்ல இருக்க வேண்டும். அந்த கன்றினை அணைத்தவளுக்கு இந்த நாகத்தினை அணைக்காமல் அதன் பின் செல்வான் ஏன் என்று கேள்வி. இப்படி எம்பெருமானுக்கு கன்றும் நாகமும் ஒன்றுதான். எல்லாமே எம்பெருமானுடைய சம்பந்தம் பெற்றவை. அப்படி அனைத்து ஜீவராசிகளிடத்திலும் சமமான பாசம் காட்டுபவர் எம்பெருமான். அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. சேவிக்கலாம் அந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை. தேவியர்கள் இருவருக்கும் எம்பெருமானுக்கும் கரங்களிலே ரக்ஷாபந்தனத்தை காப்பு கட்டுதல் என்ற பெயரிலே கைங்கரியம் செய்வார்கள். அப்படி செய்யும் காரியத்தை அதை மன உறுதியுடன் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்பது பெரியவர்களின் வாக்கு. அதேபோல் இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. நாம் தரிசித்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த வேளையில் பெருமாளை இவ்விதமாக வர்ணிக்க தோன்றுகிறது. சுமார் 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஸ்ரீனிவாசாச்சாரி என்ற 20 வயது இளைஞனிடம் பகவான் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நரசிம்மர் ஒரு சந்நியாசி ரூபத்திலே வந்து மாலோல நரசிம்ம மூர்த்தியை அளித்து ஆராதிக்க சொல்லி இந்த அகோபில மடத்தையும் அமைக்கச் சொன்னதாகவும் ஒரு வரலாறு உண்டு. அன்று முதல் அந்த மாலோல நரசிம்ம மூர்த்தியை பாரதம் முழுதும் பவனி வந்து அனுகிரகித்த பெருமை அந்த அகோபில மட ஜீயர்களாகிய அழகிய சிங்கர்களையே சாரும். இப்படி தோன்றிய அகோபில மடம் இன்று பல இடங்களில் பரவி பகவானுக்கு சேவை செய்து வருவது பாராட்டத்தக்கது. அப்படி இங்கே உள்ள பெரிய ஆலயத்திலே ஸ்ரீ பிரகல்லாத வரதனான லக்ஷ்மி நரசிம்மர் சேவை சாதிக்கின்றார். தாயார் அமிர்தவல்லி என்கின்ற திருநாமத்துடன் அமிர்தம் என்னும் அருளை வழங்குகிறார். இங்கே நாம் எது கேட்டாலும் உடனே திவ்ய தம்பதிகளின் செவிசாய்த்து நம் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுகிறார்கள். ராமபிரானுக்கும் திருவேங்கடவனுக்கும் இங்கே சன்னதிகள் உண்டு. சீதையை தேடி வரும் ராமர் தம் தம்பி லக்ஷ்மணனுடன் 5 ஸ்லோகங்களால் நரசிம்மரை உபாசித்ததாக புராணம் கூறுகிறது. அப்படி திருமலையில் திருவேங்கடவன் பத்மாவதி தாயார் திருமணத்தின் பொழுது யாருக்கு முதல் நிவேதனம் செய்ய வேண்டும் என்றாராம் ஸ்ரீ வெங்கடேசர். அதை குறிக்கும் வகையில் இவரது சந்நிதி இங்கே உள்ளது. பெரியதாகவும் உள்ளது. ராஜகோபுரத்திற்கு எதிரிலே பூமிக்குள் கீழ் 30 அடி உயரத்தில் 80 அடிக்கும் மேலான ஒரு தூண் உள்ளது. இதற்கு ஜெயஸ்தம்பம் என்று பெயர். இதன் எதிரிலே நின்று நாம் ஏதேனும் பிரார்த்தனை செய்தால் கண்டிப்பாக நிறைவேறுகிறதாம். அப்படி அங்கே லக்ஷ்மி நரசிம்மனாக அகோபிலத்திலேயும் திருவேங்கடவனாக திருமலையிலும் எழுந்தருளிருக்கும் பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ பிராட்டிமார்களுக்கு கூட ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை
செய்ய உள்ளார். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய அவதாரம் என்பது, அதாவது தச அவதாரங்களிலே ஒன்று இறுதியானது. அப்படிப்பட்ட அந்த நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்த திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தான் இதோ இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சிமார்களுக்கும் ரக்ஷாபந்தனம் நடைபெறும். இருவருமே நம்மை காத்து ரட்சிக்கும் தாயார்கள். நாம் ஏதாகிலும் தவறு செய்திருந்தால் அதை மன்னித்து மறந்து நம் தவறுகளை மறைத்து பெருமாளிடம் நமக்காக பரிந்து பேசுபவர்கள். இந்த இரு தாயார்களும் அப்படி நமக்காக பரிந்து பேசிய தாயார்களுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நடத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து பூர்வ ஜென்மத்திலே நாம் செய்த புண்ணியத்தின் பலனாகத்தான் இப்பொழுது அந்த தேவதேவனுக்கும் நாச்சியார்களுக்கும் நடைபெறும் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை கண்டு அவர்களின் அருளினை வெறும் பாக்கியம் கிடைத்துள்ளது. அப்படி பகவான் சாமானியன் அல்ல. எந்த நேரத்தில் எப்படி அருள் புரிய வேண்டுமோ அந்த நேரத்தில் நம்மை சோதித்து அருள் புரிவான். வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக நாம் சேவிக்க இருப்பது அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்கலாம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிப்போம் அக்னியை, அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய், ஓம் நமோ நாராயணாய கோவிந்தா கோவிந்தா, யக்ஞரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்துக்கொண்டு இதோ அக்னி ஆவாகனம் செய்ய உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாணம் यो नो अग्निष्पितरो उत्स्वन्दरमर्त्योमर्त्यागम् आविवेश तमात्मन् परिगृह्णीमहे वयं मासो अस्माकम् अवहाय परागात् उपावरोहजातवेदः पुनस्तं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजानन् आयुप्रजागं प्रियमस्मासुते चितस्रोदेति हिनोतरोणे अग्न आयाहि वेतये गृणानो हव्यनातये निहोदा सत्सि बर्हिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रथम ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तात् श्रीमतस्रुचो वेनावः सभद्रया पुमा अस्य विष्टासतस्य नमस्तस्य पुमः ओं भू ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदवासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमाशकं सोमो वीरङ्करमन्यन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदराज तस्मै ओं भूस्वमवाहयामि ओं भवर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सवरिन्दमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदवासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रोक्ष्या पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्मये स्तो वाजपूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्तः परशस्य पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पुमो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं रजताग्रे यज्ञपतिं धत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीत वृत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमव्रणीर्थं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णभः प्रणेष्यामि गीतमानवाचं यच्छा प्रणयजिग्नं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्ते सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया सोमापप्रणेष्यामि गीतमानवाचं यच्छा प्रणयं यज्ञं देवतावर्धयत्पन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणाकं सुकृतां यत्लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेहि ओं प्रणया ओमप्रणयतसमप्रणयत्वापो नेमि प्रणयान यज्ञकं सुखं साधयन्तु नः इदं वदन्ति कृतपृष्टावदाकुः सहस्रपोषं यजमानेऽन्यञ्चतीः प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि
ఇంద్రమావాహయామి వసూనావాహయామి మరుదావాహయామి రుద్రానావాహయామి ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణుమావాహయామి బృహత్ప్రేమావాహయామి మిత్రమావాహయామి వరుణమావాహయామి ఆదిత్యానావాహయామి అశ్వినావాహయామి పూషణమావాహయామి కక్షమావాహయామి కక్షదేవతసోమావాహయామి ఔపాసనయజ్ఞమావాహయామి యజ్ఞదేవత విశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి ఆజ్యభాయే ప్రజాపతిరిష్ణోవామి బ్రహ్మణేరిష్ణోవామి ఇంద్రాగరిష్ణోవామి అగ్నేయరిష్ణోవామి సోమాకరిష్ణోవామి అగ్నయేరిష్ణోవామి సోమాకరిష్ణోవామి అగ్నిశోమాభ్యాం రిష్ణోవామి ప్రజాపతిరిష్ణోవామి బ్రహ్మణేరిష్ణోవామి ఇంద్రాగిరిష్ణోవామి వశభ్యోరిష్ణోవామి మరుద్భ్యోరిష్ణోవామి రుద్రేభ్యోరిష్ణోవామి ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవేరిష్ణోవామి బృహత్ప్రయేరిష్ణోవామి మిత్రాగిరిష్ణోవామి వరుణాగిరిష్ణోవామి ఆదిత్యేభ్యోరిష్ణోవామి అశ్విభ్యారిష్ణోవామి పూష్ణేరిష్ణోవామి కక్షాగిరిష్ణోవామి కక్షదేవత సోమాగిరిష్ణోవామి ఔపాసనయజ్ఞాగిరిష్ణోవామి యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జుష్టుం నిర్వవామి సర్వదేవేభ్యో జిష్ణుర్వవామి ఆద్యం తృప్తిస్రగామి చరం తృప్తిస్రగామి అగ్నే ద్యోతరసి సమితసి స్వాహా అమృతమసి వారుణమసి అంతరితకం రక్షోంతరిత అరాతయః ప్రతిష్ఠకం రక్ష ప్రతిష్ఠ అరాతయః చిత్తతిస్థాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః వాక్పతిస్థాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః దేవస్తాజవిధాపనాత్ తచ్చిత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః కృతసంపూర్ణావాసమిథో గృహీత్వా ముడాగ్రాభ్యాం కృతం స్పర్శయిత్వాభ్యర్చ్య అక్షతా ఆచ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నైష్టకాధేనవ సంత్వేకా చ శతం చ సహస్రం చ ఆయుతం చ నిగితం చ ప్రగితం చ అర్పుతం చ న్యర్పుతం చ సముద్రశ్చ మధ్యం చ అంతశ్చ పరార్ధశ్చ ఇమామే అగ్నైష్టకాధేనవ సంత్ ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుతయే నమః వరుణాయ నమః వాయవే నమః కుబేరాయ నమః ఈశానాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేదసే నమః సహోదసే నమః జనాప్రమే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః జాతవేదసే నమః అదితేన మన్యస్వ నమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవేతః ప్రసుభా షష్ఠిచతురహస్రాణ్యయుతమక్షయమర్పదమానయ అయంత యుద్మాత్మా జాతవేదస్తేనేద్యస్వవర్తస్వజేత్తవర్తకిరాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిర్బ్రహ్మవర్చసేనాన్నాద్యేన సమేధయ స్వాహా వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతయే స్వాహా నైరుత్యాధీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా అగ్నయే స్వాహా సోమాయ స్వాహా అగ్నిశోమాభ్యాగు స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా బ్రహ్మణే స్వాహా ఇంద్రాయ స్వాహా వసుభ్య స్వాహా మరుద్భ్య స్వాహా రుద్రేభ్య స్వాహా ఆపాపోపస్పృశ్య శ్రీమహావిష్ణవే స్వాహా బృహత్పతయే స్వాహా మిత్రాయ స్వాహా వరుణాయ స్వాహా ఆదిత్యేభ్య స్వాహా అశ్విభ్యాగు స్వాహా పూష్ణే స్వాహా కక్షాయ స్వాహా కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా ఉపాసనయజ్ఞాయ స్వాహా యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా సర్వదేవేభ్య స్వాహా ద్రవ్యాభికార్యా ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సమస్వాహా ఓం భూర్భవస్వ స్వాహా అదితేన్మమక్స్తాః అనుమతేన్మమక్స్తాః సరస్వతేన్మమక్స్తాః దేవసవిదప్రాసావేః అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంకర్మణి ఉపాసనాగ్నో సర్వప్రాగచిత్తార్థమతో దేవాది షట్మైష్టమహోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిదప్రసుమా ఓం అతో దేవా అవంతనాయతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామభిः స్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానతధేవలం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా त्रीणि पदापिचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो वृदानि पश्यति इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरातरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रवागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सुभस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममक्स्ताः अनुमतेन्ममक्स्ताः सरस्वतेन्ममक्स्ताः देवसविदप्रासावीः తెరదీయరే పూల దండలు
గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొక్కలు చూచేరొకరొకరు పూల దండలు తీసి పువ్వులియరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి కోగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలియరే మొగరుదేర కస్తు శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకారమహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణీనావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహకూర్మానంతాష్టదిక్కజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అథోభాగే మహానాలాయమానస్య మణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపతే సంయమనే రక్షోపతే సింధుపదే గంధవత్యలకావతే యశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్తివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాల్లోకాచలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పిత శిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమణయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారియాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుష హారీనామృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు యహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారమార్థకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత అనావృత మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వం స్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితధామాతవ సంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కృతరాశీర్వర్షధస్రావధానే ఏకైక తిలామకరశనక్రమేణ సర్వరాస్య మకరశన సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యావసాంతపణవాజపేయపౌండరీక ఆశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలాపాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఖనోమణీంద్రమదానుసారవిర్భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిभिः दिव्यमहर्षिभिः ऋक्तगुह्यधर्मपुराणगितिहासकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये ॐ अस्य श्रीमदादिनारायणस्य
అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్రశారంగ కౌమోదకీ నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమత్ వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణ భూషస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ కర్మణో క్షియాతి వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయ కారణ భూషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాసుదేవ శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగీరస బృహస్పత్య భారద్వాజత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యమాల్యోభిశోభితాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడ వాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినౌ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజస్సామాధర్వణశకరవేదాధ్యాయినీం భార్గవత్స్యమన ఆప్నమాన అవ్రువవేదలమంజారుషేయ ప్రవరాన్విత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం భృగో సంగల్లవదనయాం ఉత్తర ఫల్గుణీ నక్షత్రే కన్యారాసౌ జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవీ నామ్నీం మాం కన్యాం దాస్యామి ఋగ్యజస్సామాధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యవ ఆవత్సారణీ ధ్రువత్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సర్వాంగనా సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహో శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంగల్వదనయాం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాయాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీర్షయా కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసేత్ ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థసిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షణ్య సర్వదేవతాః మిమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదానముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கைங்கரியங்களை கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க உள்ளோம். மாங்கல்ய பூஜை என்பது அந்த பிராட்டிமார்களுடைய மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இவ்வேளையில் அரங்கத்து நாயகனான ஸ்ரீ ரங்கநாதன் சத்தியமங்கலத்தில் எழுந்தருளியுள்ள காட்சியினை பற்றி அறிந்து கொள்வோம். பக்தர்களே, ஸ்ரீரங்கநாதனின் விக்கிரகத்தை காப்பாற்றுவதற்காக நம்முடைய முன்னோர்கள், அதாவது பெரியவர்கள், மிகவும் பாடுபட்டு இந்த தலத்தை அறிந்தார்களாம். ஸ்ரீமத் ராமானுஜர் தன் திவ்ய திருஷ்டியால் தெரிந்து கொண்டு ஸ்ரீரங்கநாதரை விட்டு திருநாராயணபுரம் சென்ற பொழுது இங்கே எழுந்தருளி இருந்து சில காலம் ஸ்ரீ வேணுகோபால பெருமாளையும் ஸ்ரீ ரங்கநாதரையும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணனையும் ஆராதித்தார்களாம். அப்படி இந்த தலத்திலே சுமார் 750 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிக உயரமான துவஜஸ்தம்பம் ஒன்றில் அழகாக சக்தி வாய்ந்த சுமார் 6 அடி உயரமுள்ள ஹனுமன் எழுந்தருளியுள்ளார். மிகவும் உயரமானதும் விசேஷ கருங்கல்லால் ஆன இந்த துவஜஸ்தம்பம் ஆஞ்சநேயரின் சிரசிற்கு மேல் சுமார் 60 அடி உயரமும் அவனது திருவடிக்கு கீழ் 20 அடியும் கொண்டுள்ளதாம். இந்த சிறப்பு வாய்ந்த பாறாங்கல்லை சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து சுமார் 5 கிலோமீட்டர் தொலைதூரத்தில் உள்ள மலைக்காடு
அதாவது மலை காடுகளிலிருந்து யானைகள் உதவியுடன் கொண்டு வந்து இந்த ஆஞ்சநேயரின் சிலை செதுக்கி பிரதிஷ்டை செய்துள்ளனர். ராம நாம ஜபம் செய்யும் ஆஞ்சநேயரின் சக்தியை தரிசித்த அந்த வினாடியே நமக்கு தெரிந்து விடுகிறது. அப்படிப்பட்ட ராமபிரான் ஆகிய திருவேங்கடமுடையானுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த பூமியில் மக்களால் போற்றப்படும் மகா காவியங்களில் கம்பரால் இயற்றப்பட்ட கம்ப ராமாயணமும் ஒன்று. ஸ்ரீ ராமபிரான் பிறந்ததிலிருந்து பட்டாபிஷேகம் வரை காவியத்தை 6 காண்டங்களாக இயற்றினார் கம்பர். ஸ்ரீ ராமபிரான் தன்னுடைய மனைவியான சீதா பிராட்டியை இலங்காபுரி வாசன் அதாவது ராவணாசுரன் அபகரித்து சென்று தன்னுடைய நாட்டில் சிறை வைத்தானாம். சீதையை தேடி ராமபிரான், லக்ஷ்மணன், ஆஞ்சநேயர் ஆகியவர்கள் வந்து கொண்டிருந்த பொழுது வாலி, சுக்ரீவன் இருவரும் சகோதரர்கள். ஆனாலும் பகை உண்டு. சுக்ரீவன் தன் அண்ணன் வாலியை கொல்வதன் மூலம் தன் அவமானத்தை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான். இப்படி ஸ்ரீ ராமபிரானும் வாலியை அழைத்து போரிடக் கூறுகிறான். சுக்ரீவனுக்கு இறுதியில் வாலியை வதம் செய்து வாலியினை அரசாக்கினான், சுக்ரீவனை அரசாக்கினான். ராமபிரான் சுக்ரீவனுக்கு இவ்வாறு அறிவுரை கூறுகிறார். சுக்ரீவனே, ஒன்றை தீர்மானிக்கும் பொழுது கண்ணால் கண்டதையும் காதால் கேட்டதையும் வைத்து தீர்மானிக்க கூடாது. அனுமானம் பிரமாணமும் கொண்டு முடிவு செய்ய வேண்டும். வஞ்சனை உடையவர்களிடம் வஞ்சனையாகவே நடந்து கொள்ள வேண்டும். பகைவனிடம் கூட சிரித்த முகத்தோடு பேச வேண்டும் என்று கூறுகிறார். அப்படிப்பட்ட ராமபிரான் ஆகிய திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அந்த மாங்கல்ய பூஜையை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பகவானை செவித்து கொண்டு அந்த பிராட்டிமார்களுக்கு அணிவிக்க வேண்டிய மாங்கல்ய பூஜையையும் செவிக்கலாம். ஆக இவ்வளவு சிறப்பான இந்த திவ்ய தேசம் திருமலையிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக தினந்தோறும் பெருமாளுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் நடைபெறுகிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தான் இதோ இப்பொழுது நாம் சேவித்து கொண்டிருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. அந்த மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை முடிந்து அதை தொடர்ந்து பிராட்டிமார்களுடைய கழுத்திலே அந்த மாங்கல்யங்களை பெருமாளுடைய அனுமதியினால் அர்ச்சக சுவாமி செய்ய உள்ளார். மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்கலாம். மாங்கல்ய தாரணத்தை ஓம் நமோ வெங்கடேசாய், ஓம் நமோ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று திருமலை வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, ஆபத் பாந்தவா அநாத ரக்ஷகா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை செவித்து கொண்டு இதோ மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்கலாம். மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்திற்காக ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடேசா, ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். प्रजापतिस्सोमगुं राजा नमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतवे कण्ठे बध्नामि शुभये सादेव शरदः शतम् श्रीदेव्यै नमः। मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजता
तंत्रयो वेदान्वसृज्यन्त तान् हस्ते कुरुता अतः सीता सावित्री भूदेव्यै नमः मांगल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि औपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा ते वसवित प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवणनां तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनाकुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अने विश्वामुतत्वया वयं धाराबुदन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति
दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाभूतत्वया मयं धाराबुदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य शुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अनु विश्वाभूतत्वया वयं धाराबुदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः ॐ भूस्वः ॐ भवस्वः ॐ सुवस्वः ॐ भूर्भुवस्वस्वः अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो सर्वप्रागित्युक्तार्थमतो देवादिशिट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसवा ॐ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदधे पदं समूढमस्य वागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य यज्ञसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पञ्चमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यक्रमणे उपासनाग्नो क्रमधात् पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नवदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुवा ॐ यतस्य कर्मणोतिरीर्षं यद्वान्योनमहाकरम् अग्निस्तस्विष्टकृद्विद्वान् सर्वकृस्विष्टकुं सहतं करोतु स्वाहा अग्नये सृष्टकृते दुहदहुदाहुतीनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमवश्मै स्वाहा अग्नये सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदावितर्षणि स्वाहा पुनरग्निचक्षुरदातरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायवं चक्षुरादित्यपक्षो स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा सवितशतेजोषितेजो मयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने सवितः सप्तदिक्वा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यदन्ति सप्तयो नीरापरत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् अनुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जुः मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं ज्योर्भुक्तं पृथिवी भुक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तम् अग्निर्जेनं वेदर्जेनं ज्योर्जेनं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविडा कृतेन समादित्यैरवसभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषधिमनस्पतिगन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितरपिता महाप्रपिता महाश्चाक्षी यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि भूयात् स्वाहा पश्चिमतः प्रतिपणया दक्षिणतः प्रतिपणया
सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्य ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदिमङ्गच्छतु तो नो वृष्टिमेरयस्माहा शुद्ध्यन्तान् देवसदनगुं शुद्ध्यन्तान् देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आबोहिष्ठामयो भवस्तानपूर्जे तथातन महेरणाय चक्षसे यो पश्यवतमोरसस्तस्य भार्यतेहनः उषतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमावमो यस्य क्षया जजन्वथ आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रियन्द्रियं दधात मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं भुदासना यत्कृतमया देव परिपूर्णं तपस्तुते प्रायश्चित्तानि यशेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषापशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि इत्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथा संगिता स्थानं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथा सुखं यथा स्थानं प्रवेशयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதலை சேவித்துக்கொண்டு பூர்ணாகுத்தியையும் சேவித்தோம். அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். ஆண்டாள் ஒரு நாள் கனவு கண்டாள். எம்பெருமான் ஆண்டாளை பாணி கிரகணம் செய்து கொள்வதாக கனவு கண்டாள். தான் அந்த கனவில் எம்பெருமான் யானையின் மீதேறி வருகிறார் போல், நாத்தனார் கூரை உடுத்துகிறார் போல், அம்மி மிதிக்கிறார் போல், லாஜஹோமம் நடைபெறுவது போல் கனவு கண்டாள். நாச்சியார் திருமழி என்கின்ற பிரபந்தத்தில் உள்ள பாசுரங்களை சொல்லிக்கொண்டே அர்ச்சக சுவாமியும் அன்னமாச்சாரிய வம்சத்தினரில் பிறந்தவரில் ஒருவருமாக தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். இம்மைக்கும் ஏழேழு பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்மை உடையவன் நாராயணன் நம்பி செம்மை உடைய திருக்கையால் தாழ்பற்றி அம்மி மிதிக்க கனா கண்டேன் தோழி நான் என்று அந்த வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தனம், மாலை மாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். பெருமாள் திருத்தோள்களை அலங்கரித்த மாலையை அர்ச்சக சுவாமி ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அணிவிக்க செல்கிறார். அந்த பிராட்டிக்காக ஸ்ரீதேவி பிராட்டியினுடைய கழுத்திலே அந்த மாலையை அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை அணிவித்தார். இந்த மாலையானது ராமாவதார காலத்திலே
சீதா பிராட்டிக்கு மாலை அணிவித்ததை நினைவூட்டுகிறது. ஸ்ரீதேவி தாயார் பெருமாள் மாலையை அணிந்து மீண்டும் அந்த மாலையை பெருமாளுக்கு அனுப்புகிறார். பெருமாளுக்கு கொண்டு வந்து அந்த மாலையை சாத்துகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடேசா, ஸ்ரீ சீனிவாசா, ஆபத் பாந்தவா, அநாத ரக்ஷகா, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானை செவித்து கொண்டு அடுத்ததாக அதே மாலையை கொண்டு சென்று பூமி பிராட்டிக்கும் சாத்துகிறார். பூதேவி தாயார் அந்த மாலையை சூடி களைந்து கொடுத்த மாலையை நாச்சியாருக்கு, அதாவது பூமி பிராட்டிக்கு சாத்தினார் அந்த மாலையை. தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை சூடி களைந்து சூடி கொடுத்த நாச்சியாராய் பெருமாளுக்கு திரும்பவும் கொடுத்து அனுப்புகிறார். இதைத்தான் நாம் இப்பொழுது தரிசித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் நிறைவு பெறுகிறது. சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா, மலையப்ப சுவாமியே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ 3 முறை மாலைகளை பரிமாற்றம் செய்து அதை தொடர்ந்து பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் கூட எம்பெருமானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதை தொடர்ந்து தலம்பிரால கைங்கரியம், அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் திருமலையப்பனுடைய పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెండ్లి కూతురు నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ